Hello and welcome to Likhawat on podcast. I'm Gautam Choubey, your host, and this is a show about the books of Bharat. This week on Likhawat, we have a guest who is a man of many distinctions, a man of many talents. He is a civil servant posted in the Railway Board's Ministry of Railways and is also an author, a novelist. Please join me in welcoming our guest today, Mr. Mukul Kumar. Thank you. Mukulji, welcome to the show. Thank you. Mukulji, when I look at you and men like you, I'm reminded of the great Roman philosopher Marcus Aurelius, who said that a man of action must also be a thoughtful man. So tell me, what is your earliest memory of reading a book and your first encounter with a book that may have left a lasting impression on you? Well, as regards my literary journey, I think first tremor of creativity I felt when I was in school. And very unconsciously, I was not very conscious of this fact that a few verses used to, fly, just within me, and I used to just scribble them, very reticently, because initially when you write, you are very shy of the fact that how it will go out to the world. As regards my tryst with reading books, so I was very fortunate that I had access to all those great classics by virtue of my ambience at home, because my father was a professor of English literature. Oh. So that way I used to be, sort of inspired by his passion for literature. And also his library, I suppose? Yeah, he had a mini library, and he could somehow sense my inclination to the literature, my fascination for the literature. And that is when at a very young age, when I was just growing up and I was just studying in school, he started motivating me to read the classics. And my memory takes me to the first book that was Pride and Prejudice by Jane Austen, that I really remember, because that left a very lasting impression on my sensibility, especially the character of Mr. Darcy. Right. And Mr. Darcy, because somehow I started identifying, relating to the character of Mr. Darcy, and a little bit of Mr. Darcy, but though quite a bit of Mr. Darcy I found in me. Right. So that is why it was a sort of resonance, and that is the book I love, and that was amongst the first books that I read. And after that, this journey continued, and whole horde of classics, I read by D.H. Lawrence, by Jane Austen, by Thomas Hardy, and Shakespeare, of course, a few dramas of Shakespeare when I was in my graduation stage. So that is how this journey continued. Any Indian work? Indian literature, I not in the initial years of my life, not in the formative years of my life, except the Hindi, which I got to study by way of the academic curriculum. Right. But later on, I felt fascinated with writers like Premchand, and I happened to read Godan. Of course, before Godan, I think Shekhar Ek Jeevani by Aghez was the first Hindi book that I could read. It's and a difficult book to read. Let me tell you, it moved me. Yeah, it's a difficult book to read. It moved me completely. And again, that sort of resonance, I could sense. Because the character of Shekhar, Shekhar Ek Jeevani, the character of Shekhar, he is sort of a rebel. A rebel, when I say, because he, somehow was a man who believed more in reason than in tradition. So this dichotomy between reason and tradition has been so wonderfully brought out. And another English classic by James Joyce, The Portrait of Artist as a Young Man. Again, these are the books to which I could instantly relate. I think these are the books which which have really gone way in shaping my literary sensibility, and at the personal level also, because somehow they have been able to shape my total personality, complete personality as a human being. आपको देखता हूँ तो a couple of images conjure up. One is an image of a man who works for the Indian Railways in charge of the safety, and then a man at his study table composing poems in solitude. आपने कब तय किया कि मुझे भी लिखना है? I also want a book in my own book in my father's library. I feel gripped with a quote that it is not that a writer chooses literature, it is the other way around. Literature chooses the writer. So it is absolutely innate, it is the gift of nature,
And as I told you, that tremor I could sense in the initial years of my life when I was studying in school. And when that tremor, that journey of the tremor continued, and when that tremor got, metamorphosed into tide, I just never know. I have never been conscious of it, but somehow I could stay afloat in this journey. And you can say that I have consigned myself to that ever swelling tide of literature in me. और उसके बाद जब एक बार मुझे उसका थ्रिल, उसका मज़ा मिलने लगा, और जो एक कहते हैं ना क्रिएटिव प्लेजर जिसको आप कहते हैं, रचनात्मकता का जो वो एहसास, अद्भुत एहसास मुझे मिलने लगा, तो somehow that kept me inspiring. पहली किताब कौन सी थी आपकी? पहली किताब कौन सी थी? पहली किताब हमारी कैथारसिस थी, वो जो मैंने फॉर्मेटिव ईयर्स में कुछ कविताएं लिखी थी अपने स्कूल एज में, अपने कॉलेज में, तो उन चीज़ों को मैंने फिनिश किया, उन कविताओं को मैंने फिनिश किया। और 2012 में जब मैं ऑलरेडी मेरे सर्विस की 13-14 साल हो चुके थे, तो मैंने डिसाइड किया कि नो, दिस इज़ द टाइम टू रीच आउट टू द वर्ल्ड, टू रीच आउट टू द रीडर्स, एंड irrepressible echoes, as you can make out from the title, like irrepressible echoes. Those echoes were very irrepressible, and they took the form of the book. And I finished all those poems, and that is how first collection came out. Right. I managed to leaf through Catharsis, and it's surprisingly mature and a finished product for a first book. Couple of poems, it struck a chord. One is a poem called The Beggar, and you also write about your housemaid and how your housemaid lives in a house that houses your car, which is the garage. Now when you write about people on the periphery, दो templates हमारे दिमाग में आते हैं. One is the template of William Blake. He was writing of chimney sweepers, empathy, sympathy. और दूसरा template आता है in the poetry of Nirala. Think of वह तोड़ती पत्थर. He looks at the beauty of this woman who's toiling hard on the road in Allahabad. Or a story like Devi. He in fact looks at this beggar who is also mute and deaf as the embodiment of universal power. How do you position yourself when you explore subjects who are on the socio-economic periphery? And might I also urge you to read while you make your point? I would love to recite a couple of poems, but before that, coming to how I chose to deal with such themes. So again, let me tell you again, I don't have a very objective explanation to this question, because I have never been very conscious as a writer to choose particular theme. I feel inspired enough to take up that theme. It comes so organically, so naturally to me. So that way, when I look back at my poetry, since I have already now published 3 poetry collections, and when I look back at at my poetry, I feel that a considerable amount of my poetry explores human values. And when we talk of the human values, I think empathy is one of the most cardinal, of the human values. So a lot many of my poems are born out of the actual sight. Right. The Beggar, you won't believe, it came out of me in 2001-2. When as a young officer, I had gone to the market, and I was just, it has been set, at the pathway alongside the market, and just in front of the garment shop, I happened to be, looking at this, beggar, and he was all barely clad, and a beggar juxtaposed against that garment shop. You can see the dichotomy, the contrast. That really captured my sensibility, and that particular scene kept churning me for pretty long before this poem came out. And this poem is very special in one in one more sense, that it was one of my first poem of the formative year of the very young age, and it ended up being selected in the International Library of Poetry, US. I felt thrilled. I just felt out of the world. When you write at such a young age, you are never very confident. It is only with the passage of time that you gain confidence. When you start, and you also become conscious. Yeah, when you start becoming conscious, now that sense of arrival, gradually comes. So you are in the journey. So Beggar, since you have talked about Beggar, let me recite this poem. The last line of this poem, which carries a very powerful symbol, and that symbol ultimately explains the entire this poem. So here goes the poem, The Beggar. A beggar, limbless,
armless, the fragments barely clad, the begging ball tied to one of the arms. He was armless, but just that portion of the arm that was left, that begging ball was tied to that arm. He rolls over the pathway along the garment shop. He rolls over the pathway along the garment shops and stomachs out a cacophonous score. And stomachs out a cacophonous score. He was just singing in order to attract the attention. His voice is getting drowned. His voice is getting drowned into the clatter of stones raining into his empty bowl. This clatter of stone, his bowl was empty. There was no currency, there were no coins. But the poet in me could see those clatter of stones here symbolize the hearts that lack compassion, that lack empathy. So that is how this poem has come out. How wonderful. एक और theme मैं देखता हूँ आपकी poetry में. As a civil servant and as someone in charge of law and order and also safety, quite a few of your poems in fact celebrate anarchy and chaos. And you visualize them, you present them as though they are very integral, very essential for any creative process to take off. क्यों है ऐसा? Creative anarchy इसको आप कैसे देखते हैं? मेरी एक पोयम है ड्रीमिंग अनार्की, तो इट इज़ वेरी उसी का जिक्र मैं कर रहा था. यस यस, तो टाइटल इज़ वेरी यू नो ऑक्सीमोरोनिक, यू कैन से कि ड्रीम, हाउ कैन यू ड्रीम यू नो ऑफ अनार्की एज सच. आई बिलीव because when you look back at history, all the major changes have taken place out of chaos. First chaos and then creation, new creation. The new creation demands that anarchy, that chaos. Unless and until a particular order is going to be dismantled, new order cannot come out. And when we are caught up in day-to-day living, you know, many a time, I think this sensibility hits many, you know, people, especially the stage of life at which I am, you know, I am there. A sense of stillness, a sense of incompleteness, and you start, you know, getting conscious of some other calling. So at times, something in you rebels against that particular context. That is what Albert Camus, you know, Albert Camus talks about freedom, rebellion, freedom and rebellion, and then he, you know, talks of passion. So it is that journey, freedom, rebellion, and passion. So that is the sensibility which inspires me to write about the creative process, to write about, you know, to express my cravings for the changes, cataclysmic changes, and that can inspire new creation. So that is how it is. How wonderful. Looking at your book Aarohi, flipping through and read through it, it's a wonderful book. The character Mihir, the protagonist, he too experiences a similar turmoil. If you look at the initial few pages, the initial chapters, he's looking back at his life and he's resentful, he's unhappy, bored even with his life, and he hopes for a great journey. And at that point he starts narrating his story in snapshots. Yeah. Take us through the character of Mihir, and does he also feel the same kind of unease that perhaps you at times feel? Because I could see shades of your own character, your own personality in Mihir. I have very honestly confessed that Aarohi, that is the Hindi translation of my first novel, debut novel, As Boys Become Men. So that was predominantly a fictional account of my autobiographical experiences. Right. So Mihir's character, I openly confess that Mihir is predominantly me, myself. So that is how, you know, this poet, and that is the first book, and you must have, because you are from literature, so you must be aware of this fact that greatest of the greatest writers have, you know, their debut novel have somehow explored all those autobiographical experiences, their autobiographical experiences. So when I really, you know, wanted, some story was waiting to be, you know, waiting to come out of me, and the first story, as normally happens, the first story ended up being mine only. Though of course, I think it is not purely, that is why I call it a fiction. It is not something like narrative, you know, non-fiction or autobiography. It is not that. Lot many elements of the fiction are woven into it. और वो मेरी अपनी कहानी है, जब मैंने लिखना चाहा, और जब मैं कविता से पहले तो ये बताऊं कि मैं कविता से उपन्यास की तरफ कैसे हुआ, मैं बढ़ा. तो चूंकि मेरी शुरुआत, मैंने कविता
ज़्यादा पढ़ी नहीं। मैंने कविता लिखी, मेरी साहित्यिक यात्रा कविता से शुरू हुई, लेकिन जो पढ़ाई थी मेरी, जो मैंने पहले मतलब अपने एकेडमिक करिकुलम के अलावा जो मैंने पढ़ाई की, वो उपन्यास मैंने पढ़े। जैसे मैंने आपको बताया क्लासिक्स पढ़े, तो वो उपन्यास पढ़ते समहाउ मुझे धीरे धीरे इस बात का एहसास हुआ कि मैं भी लिख सकता हूँ। यूपीएससी में साहित्य पेपर रखा था आपने? नहीं, मेरा साहित्य में कोई पेपर नहीं था। हमारा इतिहास था और समाजशास्त्र था, सोशियोलॉजी लेकर के मैंने मेंस की परीक्षा लिखी थी। लेकिन जो जैसे मतलब मैंने कहा कि साहित्यकार होने के लिए साहित्य पढ़ना ज़रूरी नहीं है। और अगर आप बहुत बड़े बड़े साहित्यकारों को देखेंगे तो उसमें से मुझे ख्याल से बहुत कम ऐसे साहित्यकार हैं जो बड़े बड़े उपन्यासकार हैं, लेखक है, जिनका कि कोई साहित्यिक जिनकी पृष्ठभूमि रही हो, या वो आलोचक बन जाते हैं। वो फिर आलोचक बन जाते हैं। तो वो मेरे अंदर वो क्रिएटिविटी का जर्म था, वो रचनात्मकता थी। और धीरे धीरे मुझे ऐसा एहसास हुआ अंदर से कि नहीं, एक कहानी मेरे अंदर भी है, वो कहानी लिखनी है। पहली कहानी मेरी खुद की कहानी थी। पहला चरित्र जो मेरा मुख्य पात्र, प्रोटैगनिस्ट जिसको कहते हैं, वो मेरा स्वयं का था। तो आरोही बड़ी एक स्पेशल, एज बॉयज बिकम मैन, एक बड़ी स्पेशल किताब है मेरे लिए। इसने मुझे उपन्यासकार बनने का जो सुख होता है, जो पहली चीज़ बड़ी प्रिय होती है हृदय को, तो उपन्यासकार बनने का सुख उस किताब ने मुझे दिया। लेकिन एक चीज़ और बताऊं यहाँ पर, अगर आप मुझे पूछे कि एज बॉयज बिकम मैन लिखने की जो प्रेरणा थी और आरोही लिखने की जो प्रेरणा है, वो दोनों प्रेरणा बिल्कुल अलग थी। अच्छा जी, आरोही एज बॉयज बिकम मैन का जन्म हुआ प्योरली जुनून से, पैशन फॉर राइटिंग। हमको एक उपन्यासकार बनना है और कहानी मेरे अंदर है। आरोही जब वो उपन्यास मैंने लिखी और मैंने वेरियस जो हैं बहुत सारे लिटरेचर फेस्टिवल्स में मैं गया, जहाँ मीडिया से भी मेरा इंटरेक्शन हुआ, तो बहुत सारे जर्नलिस्ट का, बहुत सारे पत्रकारों का ये था, और बहुत सारे एकेडमिशियंस का भी ये मत था कि इस किताब को, चूँकि जो हमारी जनसंख्या है और हमारा जो युवा वर्ग है, उसका एक बहुत बड़ा तबका जो बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ऐसे क्षेत्र में है जहाँ अभी भी हिंदी माध्यम के विद्यार्थी ज़्यादा हैं। तो उन हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को लोगों ने बोला कि थोड़ी इसमें मोटिवेशन के एलिमेंट्स हैं, कि हाउ मिहिर जो है, मिहिर एक अपने प्रयास में एक लगा रहता है। सिविल सर्विसेज की परीक्षा बड़ी चैलेंजिंग परीक्षा है, तो उसकी इनिशियली उसको शुरुआती के दौर में उसको कुछ विफलताओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो बिल्कुल दृढ़ता के साथ वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जाता है। तो एक मोटिवेशनल एलिमेंट है इस किताब में, एक मोटिवेशन है, एक प्रेरणादायक किताब है। तो मैंने पहले एज बॉयज बिकम मैन की जो प्रेरणा थी वो थी जुनून, और इस किताब की जो प्रेरणा है वो है सेंस ऑफ सर्विस, सेवा भाव। उन विद्यार्थियों के लिए लिखा मैंने जो विद्यार्थी इसको हिंदी माध्यम के हैं। तो जैसे आपने कहा कि बहुत बड़ा तबका है कि उनको मरहूम क्यों रखा जाए, तो बस वो एक सेवा भाव से प्रेरित हमारी ये पुस्तक है आरोही। Mukul ji, it's not uncommon for a civil servant or a bureaucrat to write a book or two. लंबी परंपरा चली आ रही है। ब्रिटिश समय से जो भी सिविल सर्वेंट्स हैं वो इंडोलॉजिस्ट रहे हैं, बाद में जाके दे ऑल्सो राइट देयर मेमो टॉकिंग अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस इन इंडिया। पहले भी इंडिया में भी सिविल सर्वेंट्स जो थे वो किताबें लिखते थे बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस, एंड दैट वुड ऑफन कॉज ट्रेमर्स इन दी कॉरिडोर्स ऑफ पावर। कुछ दिनों से ये भी परंपरा चल रही है कि जो अनुभव है, द रोड टू सिविल सर्विसेज, उसके ऊपर लिखते हैं। एक किताब आई थी पिछले दिनों, 12th फेल, जिसका अंग्रेज़ी अनुवाद खुद मैंने किया है। माँ आई हैव बिकम अ कलेक्टर दूसरी किताब आती है। आपकी किताब इनसे अलग कैसे है, एक ये सवाल, और इसी से जुड़ा एक सवाल है, क्या सेवानिवृत्ति के बाद यू ऑल्सो गोइंग टू राइट समथिंग, अ मेमोर ऑफ सॉर्ट्स? पहले तो आपका पहला प्रश्न कि आपकी किताब इनसे अलग कैसे है, तो 12th फेल किताब तो मैंने अभी तक ईमानदारी से बताऊंगा मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन 12th फेल का एक सेंस जो मैंने देखा, शायद OTT प्लेटफॉर्म वगैरह पर भी इसके बारे में चर्चा है, तो मैंने वहाँ से जो भी मैं इसके बारे में समझ पाया कि वही सिविल सर्विसेज में 12th फेल की इनिशियली आप एकेडमिकली बहुत अच्छे नहीं हैं, विद्यार्थी नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपने मेहनत की। रैग्स टू रिचेस वाली कहानी। हाँ, रैग्स टू द रिचेस वाली कहानी है। तो ये आरोही वैसी किताब नहीं है, उस तरह की पुस्तक नहीं है, रैग्स टू द रिचेस वाली नहीं है। मेरे इसमें एक अच्छा विद्यार्थी भी था, और उसमें मैंने उस संदर्भ को बहुत बखूबी से उभारा है कि जिस परिवेश ने, जिस संदर्भ ने उसको सिविल सर्विसेज की तरफ प्रेरित किया है। तो वो एक शिक्षक का लड़का है,
अच्छा विद्यार्थी है Right. तो वो सिविल सर्विसेज दे रहा है, तो अच्छे घर 12th से फेल भी है। जी हाँ, और तो 12th फेल से थोड़ा सा अलग तो यहीं पर ये फिर हो गई पुस्तक। और फिर मैंने इस किताब में और एक है कि इसमें जो जैसे हिंदू ने इस किताब को जब रिव्यू किया था तो वो रिव्यू मुझे इसलिए अच्छा लगा था कि वो बाकी रिव्यू से थोड़ा अलग था। उन्होंने कहा कि इसमें इतिहास, धर्म और दर्शन के तत्वों को बखूबी से बुना गया है। तो ये किताब सिर्फ मेरी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन को या डिटर्मिनेशन को या उद्दृढ़ता को केवल उसकी कहानी नहीं है, ये थोड़ी सी एक मल्टी लेयर्ड जो तो कहते हैं बहुपर्ती कहानी है, जिसमें कि इतिहास, धर्म, दर्शन के बारे में और रीज़न, जब कोई भी लेखक जो होता है वो रीज़न से ट्रेडिशन को, जैसे हमारा एक बहुत फेवरेट ये हमारा फ्रेज़ है कि यू ट्राई टू माइंड ट्रेडिशन विद द स्पीड ऑफ रीज़न। राइट। तो वो है इसमें रीज़न को, एक रैशनैलिटी को, जो हर लेखक का अनकॉन्शियस एक ऑब्जेक्टिव हो जाता है, एम हो जाता है कि समाज में हम, क्योंकि मेरा मानना है कि जो आपकी सामाजिक जितनी सारी बुराइयां हैं, अगर आप रीज़न को लेके चलते हैं, अगर आप तर्क को लेके चलते हैं, लॉजिक को लेके चलते हैं, तो उसका इमोशन की ही तरफ ही लेके जाएगा। एट पर्सनल लेवल एक लेखक के रूप में मैंने कभी तर्क और भावना के बीच में कभी कोई क्लैश हो या कभी कोई ऐसी डाइकोटोमी महसूस नहीं की। जब मैंने तर्क की बात की, जब मैंने रीज़न की बात की, तब मैंने पाया कि मैं इमोशन की तरफ ही प्रेरित होता हूँ। तो आप चाहे फेमिनिज्म को ले लें, चाहे आप पॉवर्टी इरेडिकेशन की बात ले लें, चाहे आप किसी भी तरह के समाज के सोशल इल्स को हटाने की बात करें, तो रीज़न अल्टीमेटली फास्टर होता है साहित्य में। इसीलिए कहा जाता है कि समाज को परिवर्तित करने के लिए साहित्य एक बहुत ही यू नो सशक्त एक वेपन है। राइट। और अगली किताब कौन सी है आपकी? अगली किताब मेरी होगी अगेन एक पोइट्री कलेक्शन, जैसे कथारसिस का आपने नाम लिया। तो कथारसिस मेरी रिदम ऑफ द रूइंस एक आई थी, ये काफ़ी प्रचलित हुई और इसने मुझे बहुत सम्मान, बहुत प्रतिष्ठा मतलब दिलाई। तो कथारसिस समहाउ जब आप पोइट्री शुरू में लिखते हैं तो मार्केट जो है पोइट्री के लिए बहुत रिसेप्टिव नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको जब आप ये फिर कविता को जब आप ये पब्लिश करना चाहते हैं तो वहाँ आपको आपकी जो इनिशियल जो आपकी शुरू की रचनाएं हैं वो आपको एक उसमें आपको खुद ही आपको प्रकाशित करना है, या आप यूँ कह लें कोई और अगर प्रकाशित भी कर रहा है तो उसमें आपको प्रिंटिंग कॉस्ट वगैरह देना पड़ेगा, क्योंकि कविता उतना कमर्शियल मार्केट उसका नहीं है। तो मेरी कविता वो पार्टली सेल्फ पब्लिश आप कह लें कथारसिस, बट रिदम ऑफ द रूइंस प्योरली ट्रेडिशनल पब्लिशिंग हाउस से आई और पूरे भारत में ये डिस्ट्रीब्यूट हुई, लोगों ने इसको सराहा, साहित्यिक मंचों पर इसकी काफ़ी प्रशंसा हुई और उससे जो मेरी ख्याति और मुझे सम्मान मिला, तो कथारसिस मैंने वहाँ से हटाई है अभी और इसी पब्लिशर से मैं ला रहा हूँ। तो वो हमारी अगली किताब होगी कथारसिस इन द न्यू अवतार यू कैन से। और हमारे पास उसके अलावा एक और फिक्शन है ऑलरेडी, उसका हमारे पास मैन्युस्क्रिप्ट मतलब रेडी है और एक नॉन फिक्शन है जो, बट अभी मेरी हमारा जो काम काज है, वो हमारा जो प्रोफाइल है, वर्क प्रोफाइल, वो थोड़ा सा उसमें है, जद्दोजहद है। तो अभी उससे थोड़ी सी अगर जब भी कभी भविष्य में समय मिला, वैसे मैं उसको लेके चल रहा हूँ, लेकिन जैसे से समय मिलेगा वैसे वैसे उसको भी आगे बढ़ाऊंगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी अगली किताब बहुत जल्दी आए और आपकी जो व्यस्त स्केड्यूल है उसमें आपको थोड़ा समय मिले, थोड़ी फुर्सत मिले, ताकि साहित्य सेवा भी होती रहे। बिल्कुल बिल्कुल, साहित्य साधना मैं उसको बोलता हूँ। मुकुल जी, आप हमारे साथ जुड़े और अपनी किताबों के बारे में, अपने साहित्य के बारे में, दर्शन के बारे में और सिविल सर्विसेज के बारे में इतनी अच्छी और इतनी महत्वपूर्ण बातें की। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू। और सनसेट टीवी का और आपका तहे दिल से आभार, धन्यवाद, जिन्होंने मुझे अपने पाठकों से जुड़ने का मौका दिया और भी लोग काफ़ी युवा वर्ग देख रहा होगा। तो मैं बहुत ही इस किताब, ये किताब जो है मेरे हृदय के बहुत नज़दीक इसलिए है कि मैंने सेवा भाव से प्रेरित होकर लिखा है और मैं आशा करता हूँ कि ये किताब जो है उन तक पहुँचे और वो उससे लाभान्वित हो सके। Thank you, viewers. I'm sure you've loved today's episode and the interaction we had with Mukul ji about his books, his poetry, his inspiration and his journey as a civil servant. I'm sure you'll soon make time for this book. You keep watching Sansad TV. I am Gautam Choubey. Namaste.